अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, सब खैरियत? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप हैदराबाद में हैं अभी? जी, मैं हैदराबाद में। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, हसन साहब। वालेकुम सलाम। ये चलाएं। ठीक है, ठीक है। एडमिट करना होगा जो लोग आएंगे। हाँ, ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है। अच्छा, पता आपके क्या हाल है? सब खैरियत है? प्लीज फिर से बताइएगा, क्या कह रहे हैं? जरा सा ऊंचा। मैं कह रहा हूँ, आपके क्या हाल है? सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है, जबरदस्त। मजा आ रहा है। टाइम नहीं मिलता बिल्कुल किसी चीज का, लेकिन इट्स वर्थ इट। नहीं, मैं बिल्कुल आपको सबसे पहले तो थैंक यू बोलना था कि यार आपने टाइम निकाल लिया। डेफिनेटली आई नो कि काफ़ी बिजी स्केड्यूल आपका भी रहता है माशाल्लाह, टीचिंग भी, फिर उसके साथ जो है स्टार्टअप भी। तो इट्स नो नो आई नो कि इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। Thank you for understanding, but you know, Kahafa, NIC and Aspire is family. There is no way to say not be there बिल्कुल for them. बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आपका क्या प्लान है? अभी प्रेजेंटेशन प्ले करेंगी या It's a हम free and conversation जिसमें resources, अपने journey की जो resources हैं, it's just like एक idea कि how can you maneuver your challenges or your struggles. And after sharing my own startup and my journey and my exposure and things I have learned, then I'll open it to question and answers as much as I can answer. सही। अच्छा, अभी बेसिकली कुछ इस तरह से कि जैसे हमारा पहला कोर्स समझे अभी इंडक्ट हुआ है, तो ज़्यादा स्टार्टअप्स तो इतने नहीं है हमारे पास, टोटल 20 स्टार्टअप्स हैं। तो लेकिन ये है कि अच्छा है, क्वेश्चन आंसर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लोग और ज्वाइन कर लो, बस 5 मिनट मुझे दें, मैं सबको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये आपका ये एस्पायर वालों का है कोई ट्रेनिंग? नहीं, ये तो NIC हैदराबाद, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद की है। NIC हैदराबाद में टोटल कितने हैं हमारे पास स्टार्टअप्स? 20 है पहले कोहोर्ट में। जबरदस्त। तो ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा जा रहा है, क्योंकि पहला कोड भी हमारा माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स हैं। तो तो how is Aspire working with NICH? एस्पायर का ऐसे इनफैक्ट कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है NIC के साथ। बस ये है कि कुछ मेंटर्स उनके हैं जो कि, क्योंकि इसमें इस तरह से कि करिकुलम पार्टनर जो हैं वो हसन साहब हैं, आइडिया जस्ट है बेसिकली। तो डेफिनेटली फिर उनकी एंगेजमेंट रहती है एज एन करिकुलम पार्टनर। सही सही। अच्छा काफा, सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी ये मेरी पहली विजिट है ये NIC हैदराबाद में। असल में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इसरा यूनिवर्सिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें अभी मैं अपना स्टार्टअप खोलना चाह रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या इस कोहोर्ट में हमारे पास वैकेंसी है हैदराबाद में, या अभी एक्सपायर हो चुका है? हाँ, हमारा जो फर्स्ट कोहोर्ट है वो तो कम हो गया है, समझे उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, वो मिडिल में 3 महीने हो गए उनको। अच्छा। अब जो है, हाँ, अब जो है वहाँ सेकंड कोर्ट आ रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सेकंड रजिस्ट्रेशन में जो है सेकंड कोर्ट जो है उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सही। ये आपकी लोकेशन ये इधर ओल्ड कैंपस, एल्टाकाजी कैंपस में ही है आपकी? बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल वही है। ओके। असल में आज ही मैंने इसकी न्यूज़ देखी थी, और सेशन के लिए भी मैंने अभी अप्लाई किया है तकरीबन आधा घंटे पहले। तो अभी मेरे पास मेल आई थी, तो शायद वो कोई जंक्स में इधर चली गई थी, तो वो मैंने उसको चेक नहीं किया। तो अभी मैं इसको ओपन कर रहा था तो यहाँ पे पता चला, तो मैंने कहा चलो सेशन ज्वाइन करके देख लेते हैं जो भी सिचुएशन होगी इस हवाले से। चलेगा, अच्छी बात है। मैं ख्याल में हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। फरह, आप अपना स्टार्ट करें। ठीक है जी। अच्छा, मुझे शेयरिंग चाहिए होगी, यू हैव टू गिव मी शेयरिंग, राइट? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैंने अलाउ कर दिया आप लेकर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मेरा नाम फराह महबूब एक है। सेकंड। जी जी। अच्छा, you give me a cue, then I'll start speaking. जी जी अब आप स्टार्ट कर लें बिल्कुल। Start now. चलें। अच्छा, एक्चुअली ये बड़ा मुश्किल होता है कि कैमरा भी साथ हैंडल करना और स्क्रीन भी, बट आई होप सो यू कैन ऑल सी माय स्क्रीन, राइट? जी जी। ठीक है, तो आई जस्ट इंट्रोड्यूस मेरा छोटा सा जो स्टार्टअप जर्नी रहा है, व्हाट इज माय स्टार्टअप अबाउट, उस जर्नी में मैंने क्या क्या सीखा, और उस जर्नी में जो सीखा उसमें व्हाट आर द रियलिटीज जो कि शायद एक्सपीरियंस से ही आती हैं, एंड आफ्टर शेयरिंग सम रिसोर्सेज दैट हेल्प मी अ लॉट, उसके बाद आई ओपन इट टू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और जितने क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे पास हुए तो आई बी हैप्पी टू शेयर दोस। सो माय जर्नी स्टार्ट्स about 1 year 10 months ago practically, जब मैं आइडिया जिस्ट के इंक्यूबेटर में माय स्टार्टअप आइडिया गॉट सिलेक्टेड। तो वो आइडिया ये था कि भाई एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल वेरिफिकेशन का फॉर्मेट हो कि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी को भी असेस किया जा सके। So what we have today as a use case under the name of Validate is for HR to understand the persona of the person they want to hire based on their LinkedIn activity and their CV. तो उनका CV स्कैन करके, उनका LinkedIn स्कैन करके acquired generates an activity score, a professionalism score, and if there are multiple people applying for the same post, then the CVs are ranked in order of preference, and the preference is set by the recruiter themselves, so it's customizable preference. तो उससे होता क्या है, इसकी क्या यूटिलिटी है? अभी हम सब ने टेस्टिफाई किया है ग्रेट रेजिग्नेशन, where even it's not just a matter of local problem or a matter of a problem of an entrepreneur, but we see that even Mang has suffered immensely due to people resigning at large, and these masses walking out are actually giving a huge void. So we might just think कि यार ये तो बड़ी कंपनीज का मसला है। Actually ऐसा नहीं है, ये छोटी कंपनीज का भी मसला है, क्योंकि at least the bigger companies have HR and operations at work, but for the entrepreneurs, small tech startups out of Silicon Valley, Pakistan, or anywhere else, well, they have to do most of the things on their own. And the biggest nightmare is that one day you wake up to a resignation right before that important pitch or that important sales meeting or something that you can't do without. So what do? You just start doing everything on your own, and that piles up your work. And then you get tired, and then you say, I can't do it. I need to roll out a job. Now, given the mass firings we've seen, the mass resignations we've seen, when you roll out a job, you end up with a lot of applicants. Now you have a fear of not only missing out deadlines, but also fear of missing out the best candidates. Like, क्या अगर मैं 2000 ईमेल को स्कैन करूं एक जॉब के लिए, और अगर 2000 ईमेल नहीं स्कैन किए तो जो बेस्ट बंदा था वो मिस आउट हो गया तो क्या होगा? Now this is where it adds to your stress, and to handle this, Validate actually automates all of this. Validate takes your requirement as a recruiter, and then it scans all the CVs, all the LinkedIn profile, and give it the rank based on your customization. So what happens is you're recruiting culturally fit people, and the chances of resignation are reduced. Also, the massive applications you're getting, you won't be tired scanning them because that's all done in bulk. So that is my own startup. The engine that does this scanning and profiling and ranking is based on artificial intelligence, and we're using text processing algorithms for these, and we call it's an inside job. So what we do is an inside job. So this is about my own startup. We've been active for operationally active for 6 months, although my company had been existent for about 1 year 5 months. And so far our MVP is ready, and we're planning to scale up it into a product. Now it sounds like सब कुछ तो हो गया, सब कुछ तो settled है, but then every day there's a new challenge. So I'm going to share what challenges I face as a CEO and how I have found
ways to not give up and keep moving. But before that, I'd like to share a good news. अभी ये आज ही मैंने देखा है रैंकिंग में कि कंट्रीज विद द मोस्ट स्टार्टअप की रॉयल रैंकिंग रॉयल्स ने जो दी है लिस्ट, उसे पाकिस्तान 17th नंबर पे आ रहा है. तो अभी पाकिस्तान की स्टार्टअप्स बहुत बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास इज कमिंग इन दिस अरीना ऑफ बिजनेस. Well, if you look at people who work at Silicon Valley or still working at Silicon Valley, they're not surprised जब कोई खत्म हो जाता है स्टार्टअप, फंडिंग जो है वो खत्म हो जाती है, या जिसको हम कहते हैं फेल हो गया स्टार्टअप, तो उसको वो घबराते इसलिए नहीं है कि दैट्स पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द इकोसिस्टम, इट हैपेंस ऑल द टाइम. But because we are witnessing everything related to tech startup for the first time, we kind of get scared. So there's no need to get scared. And I think that my audience is the people who should be interested in this talk have tech startups. So I want to address how to not go wrong in a tech startup. So usually tech startup जब शुरू होते हैं तो ये होता है कि आपके पास कोई टेक्निकल स्किल होती है और आप उस स्किल इतनी मेहनत करते हैं कि उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है और आपको अंदाजा होता है कि वो यूटिलिटी मार्केट में सेल की जा सकती है, उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है. तो इस कॉम्पिटेंसी के साथ टेक स्टार्टअप्स जो है उनका आइडिया from a project or a research or a hobby to it transforms into a startup. Now that is where I'd say you are competent, you know your work, and that's a great thing. But competency alone will not make your idea a startup. You also need to have empathy. तो आप लोग अभी जो भी अंडर ट्रेनिंग है NIC में आपको बताया जाता है कि you should have your features, you should have a unique selling proposition, your value proposition, your customer journey should be ready, and then you should know the pain points that you're trying to solve in your customer's experience. So what I've done on this slide is I have divided all these into what you need to do through your competency and what you need to do through empathy. And somehow engineers all over the world are a little low on empathy, so we need to learn to develop empathy because we need to understand people whom we are going to sell this product. So competency में तो आपकी features of product आ जाएंगे और आपका unique selling proposition, that is your competence, that is why you stand out. But then what is empathy? Empathy is the person who's ready to pay for your product. What is in the product for that person? What is the value that person is getting? And you have to think from that person's viewpoint. And at what point in time your customer will need to use your service? अब जो मेरा startup है valid है, हर वक्त तो एक बंदा recruit नहीं कर रहा होता. But the pain point when there's a last minute resignation surprise and someone wants to recruit culturally fit employee, that is the point in the customer journey that I can address a pain point. So understanding your own service from the vantage point of your customer, ये एक बहुत success की एक important ingredient है. Another thing very important, tech startups में हमें लगता है कि MVP बनाना is half the way through. Well, actually anyone who's into technology can understand that when you conceive an idea, everything looks cool because the parameters are really in control, and then you build upon it. That's a project or an FIP or a university research or something. So far so good. And then you launch that idea as an MVP. You go to an incubator, you learn competency and empathy and how to bring them together, how to make your pitch decks. And hopefully that is where you are also seeking funding for scaling up your idea. You have to understand one thing. It's a lot of complexities that you cannot even think of. So अगर आप कब सोचो ना कि मैंने MVP बना ली है और जब मैं इसको प्रोडक्ट बनाऊंगा तो फिर तो काम ही नहीं एक्स्ट्रा करने वाला MVP से प्रोडक्ट, तो ये बहुत बड़ी गलती है. आपका टाइम ज्यादा कमिट होगा. जब शुरू में हमें एंजल इन्वेस्टर मिले तो हमें उन्होंने कहा are you going to be a full-time founder? Do I need to be a full-time founder? I can do this while working, and why do I need to quit my job? But today I understand that the more we try to scale up, एक यूनिट का फीचर भी हम और डाल दें तो उसमें हर चीज इतनी ज्यादा डिफरेंट हो जाती है, and we have to put it back together again, and that only the person who understands the business can do. So you can't recruit another person to do these things for you.
So be very mindful on scaling up, because scaling up requires you all in. And it's a little tricky because the way we have a price hike and global recession financially, and it's difficult to pay the bills and also scale up the product. And also it is difficult to get the investment at this stage. But those are the balls you have to juggle with, and you can only do all these things if you are crazy about your idea. So if you're not really crazy about the idea, then this is the point where people say, okay, we're done, we're not going any further. अच्छा, ये तो हो गई हमारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड बात. अब एक सीईओ या एक को फाउंडर या जो स्टार्टअप लॉन्च करे, उनके लिए और क्या चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं. देखिए, एक तो आई थिंक कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. The kind of training you're taking at NIC, etc., it's very important, because this training, even if you're very tired and didn't sleep last night because of work, and you think मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, आप फिर भी इन trainings पे रहें, because they develop your network. And networking is you need to be very well networked with the right kind of people for your product to go out in the world. It will go through you. I have listed a lot of websites that have helped me, and I'll share those. Actually, let me share those. Is this the one? No, I'm sorry, it's the wrong window. Yeah, so these are the websites I want you to have a look at. कि मुझे बहुत फायदा हुआ इन जगहों पे जाके. First of all, as yourself, I started with Aspires Ideagist. वहाँ पे मेरी कहाफा से तो मुलाकात हुई, जमीला से, हसन साहब से. They were the first people who converted me into a CEO. Then I joined Indus Tech Lab का एक project था, NIC कराची. उस वक्त असफर कराची में होते थे. So these people, they have been in this for a very long time. So things that are very new to you are very common for them. And then the way they talk and help you, and the mentors that they bring in, वो आपका दिमाग सोचने का तरीका बदल देता है. Currently मैं इस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं AI ML Reactor, currently मैं इसमें enrolled हूँ, और ये Epiphany के साथ jointly AWS co-partner करके launch किया उन्होंने. AI startups के लिए बड़ा जबरदस्त project है. इस साल का तो हो चुका है उनका इनटेक, मगर अगले साल के लिए भी माइंडफुल. इट्स अ गुड प्लेस. आपको मेंटर्स मिल जाते हैं, टेक्निकल हेल्प मिल जाती है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. और एपिफनी ने इन द पास्ट बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो दिस इज अ गुड प्लेस टू गो टू. एंड देन my startup is also at Stanford Accelerator. I can't seem to move this control. हाँ जी, तो ये स्टैनफोर्ड सीड एक्सेलरेटर है. इधर भी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिल जाती है, आपको जबरदस्त नेटवर्क मिल जाता है, और आपके मेंटर्स आपको जरा सा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन हाउ थिंग्स आर वो दे देते हैं. इधर से मैंने बहुत बेनिफिट किया. आई जस्ट मेंशन एस्पायर से मैंने बहुत बेनिफिट किया. फिर आई स्टम्बल्ड अपॉन पार्क लॉन्च. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने एंजल इन्वेस्टमेंट का तक फंडिंग, प्री सीड फंडिंग तक मैं नहीं गई हूँ. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, but the people that you meet and the skill set that they have, it has helped me immensely. Great community and very active community. और उसके बाद एक और रिसोर्स जो बहुत जबरदस्त है, वो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का जो मिडिल ईस्ट का ग्रोथ एक्स एक्सेलरेटर है. इट हैज अगेन स्टार्टेड. इनका कोहोर्ट 3 सितंबर 2022 में स्टार्ट हो गया था. मगर इस तरह के जो एक्सेलरेटर्स हैं वो बड़ी हेल्प करते हैं इन मल्टीपल वेज. आप इफ नथिंग एल्स, आप जब 50 मुल्कों के लोगों के साथ बैठ के काम करते हैं, तो आपके एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है. और इन जगहों पे जाने, और जो हमारे अभी NICK में हुआ था, बिल्ड बाय हर, और इस तरह के जो कंपटीशन होते जाते हैं, it's not that you have to win that. Don't ever think कि मैं जीता नहीं तो, या मैं जीती नहीं तो कोई बहुत बड़ा मसला है. Always remember कि इस जगह पे जाना, इधर लाइक माइंडेड लोगों से मिलना, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना प्रेजेंट करने में, those are the things that really matter. See, you're not here for winning one competition, and you should not be out of the market because you didn't win one competition. And competition में एक ही जीतता है. तो ये चीजें बहुत मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करने लग जाती हैं कि मैं इधर से भी रिजेक्शन, उधर से भी रिजेक्शन. So you have to be mature and understand you're not here to get depressed, and you're not here for that one competition or two competition or one application. तो आपको जब in this journey आपको बहुत rejections मिलेंगी, but you have to understand that should not bog you down.
So once in my own startup, once I got enough learning, and I'm still learning, I'm still part of AI ML Reactor and Seed Spark at the same time. I have a part-time job at IB. I teach as a visiting faculty, and then the rest of the day I'm working around my product development with my co-founders. So it is a tall order. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. Maybe if now you look at my face, you can see the dark circles. It's not easy, but it's worthwhile. If it were not worthwhile, I won't be putting in this much effort. अब जनाब आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब ना let's get to the brass tacks. अब प्रोडक्ट से पैसे कैसे कमाने हैं? And that is the most challenging and the most surprising experience, because कोई क्लासरूम में बैठ के, जूम मीटिंग पे बैठ के आपको बता ही नहीं सकता कि आपने जो भी किताब में रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो वाकई में फंक्शनल है, और जो फंक्शनल है वहां तक पहुंचना कैसे है. तो देखिए, अब हम रियलिटी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आजकल कम हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आल्सो इन पाकिस्तान. और इन्वेस्टमेंट में एक चीज आप देखिएगा कि जो फ्यूल बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डिट्रीट हुई है, और जो हार्डवेयर बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट मुश्किल से आ रही है इन माय ऑब्जर्वेशन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर जाएं. अच्छा, लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो गई है, तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी इट्स डिफिकल्ट टू टैप. एंड आल्सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मनी, यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू कैन आल्सो find people who are not honest, because they're probably also there for money. So you have to be very vigilant before you put your signature on any money related document, any commitment of money. You need to understand what you're signing up for. कहीं ये ना हो कि आपकी lack of knowledge में जो है अगले का कोई आपको नुकसान पहुंचा दे, आपकी स्टार्टअप को नुकसान पहुंचा दे. So and then then you have to, maybe if your startup is that complicated in terms of generating money, so investment experts hote hain, you have to have them as consultants, or you should go to dependable startup lawyers to seek help. That is important. Also, I have taken out some really cool VC funds की websites. तो इन्वेस्टमेंट उठाने का जो तरीका होता है वो ऐसा नहीं होता कि हर इन्वेस्टर हर एक को पैसे देने के लिए तैयार होता है. तो आप जो भी पाकिस्तान में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, you can go to the website, and when you go to the website you can actually look at the startups they funded. एक स्टेज, यानी कुछ लोग सिर्फ प्री सीड फंडिंग करेंगे, कुछ लोग सीरीज ए करेंगे, कुछ सीरीज बी करेंगे. तो उनके जो साइज है जिसमें फंड करना चाह रहे हैं वो आपको पहले पता हो, और उनका वर्टिकल क्या है जिसको फंड करते हैं. जब आपको ये दोनों बातें पता होंगी तो आप उस पोजीशन पे होंगे कि यू विल डिसाइड कि मुझे किस वीसी के पास जाना है. सो अब I2I वेंचर्स अगर आप देखें तो I2I वेंचर्स का एक पोर्टफोलियो होगा जिसमें वो सोशल कॉजेस को किस लेवल तक की फंडिंग देते हैं, एंड देन यू कैन सी दैट. इसी तरह इंसाइटर है, सो इफ यू गो टू इंसाइटर यू कैन सी देयर पोर्टफोलियो. सो एवरी VC हैज अ पोर्टफोलियो. And by the way, Epiphany also funds in sustainable projects, sustainable growth projects. And then we have what? Devasai Ventures, they'll have their own portfolio, early stage sector agnostic investments. So you need to see कि आप किस लेवल की फंडिंग को सीख कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप किस लेवल पे है, और उससे कौन सा VC मैच हो रहा है. So that is how you, and alongside with venture capitalists, you can also look for grants. It would be great if you can win some competition prize money, and you can also look at side by side if there's a possibility of generating revenue side by side seeking funding. So well, I think that's all that I have to say, and I'm open to questions if there are any. थैंक यू वेरी मच फराह. माशाल्लाह काफ़ी अपने प्रैक्टिकल नॉलेज दी है स्टार्टअप्स को, क्योंकि यूजुअली जो है बड़ा ही एक समझें प्रेजेंटेशन बेस्ड जो है वन साइडेड जो है वो एक हो रही होती है सेशंस. तो अच्छा, इसमें एक सवाल मेरा है, उसके बाद मैं सबको डेफिनेटली इंकरेज करूँगा कि वो लोग भी अपने जो भी क्यूरीज हैं पूछ लें. यूजुअली स्टार्टअप जो होते हैं उनको ये होता है कि पैसा आएगा तो फिर हमारा स्टार्टअप जो है ना आगे ग्रो करेगा. ठीक है, तो फंडिंग इतना ज़्यादा फोकस होता है बनस्बत प्रोडक्ट या सर्विस डेवलपमेंट जो भी वो काम करना चाह रहे हैं. तो आपने तो माशाल्लाह काफ़ी
एडवांस लेवल तक अपने स्टार्टअप को लेकर जा चुकी हैं, तो आप क्या समझती हैं या आपका क्या मैसेज है इन लोगों के लिए? अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी लंबा जवाब है लेकिन आई थिंक इट्स वर्थ शेयरिंग। शुरू में हमने कहा कि भाई हम तो फंडिंग, अच्छा मुझे तो आई वाज वेरी लकी कि मेरा स्टार्टअप जैसे ही एक्सेलरेटर से निकला है तो वो हमारे एंजल इन्वेस्टर ने जो है ना ही ब्रॉट अस अंडर द विंग्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट आल्सो समझाने में टेक्निकलिटीज। लेकिन वो हमारी एग्जॉस्ट हो गई फंडिंग, तो जब हमारी फंडिंग एग्जॉस्ट हो गई तो हमने 6 महीने पहले सोचा था कि अब फंडिंग उठानी ही नहीं है, हम तो बड़े चीते हैं, हम तो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ कि हम लोग 4 बेटा टेस्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, मतलब हमें यही चाहिए। तो हमने कहा कस्टमर्स भी आ गए, अब क्या मसला है। देखिए ये झूठ नहीं बोल रहे थे वो लोग, हमारी हेल्प कर रहे थे, मगर टेक्निकली जब तक आपके पास पे ऑर्डर साइन नहीं है, जब तक आपने अग्रीमेंट नहीं कर लिया, वो सर्विस लेके उसके अगेंस्ट पैसे नहीं दे रहे, तो वो कस्टमर नहीं है। वहां पर जाके यूजुअली कस्टमर सेकंड थॉट देते हैं कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वो ये कहेंगे अच्छा इसमें 2-3 चीजें आप चेंज कर दें। अब हम पर कस्टमर कितनी कस्टमाइजेशन करें, तो वो भी एक चक्कर था। फिर वो कहीं रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे। फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कहा यार हम तुम्हें एक्वायर कर लेते हैं, तुम लोग बहुत डिस्परेट लग रहे हो। So you know that's okay, it's perfectly all right. हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो हर कोई कॉम्पिटिटिव है हमारी तरह, हर एक का दिमाग बहुत चलता है, so why not. So हमने फिर अपने आप को कंजर्व किया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया कि नहीं वी डोंट वांट टू बी एक्वायर्ड, और हम लोग इक्विटी के अगेंस्ट नहीं देंगे कोई सेल्स वगैरह या इस तरह हम पैसे हमसे। तो फिर हमारे पास एडहॉक आई हैं सर्विस इंक्वायरीज, और एडहॉक हमने बेचा। फिर हमें पता चला केपीआई होता है एमआरआर, यानी कि मीन रिकरिंग रेवेन्यू, जो हमारा है ही नहीं। फिर हमने कहा हमने एमआरआर यानी अपने रिकरिंग रेवेन्यू या महीने के महीने जो है ना वो ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा फिर हम फिर से जब बाहर गए, हमने पेमेंट्स लेना शुरू की। अब हम भी तो पैसा लगा रहे हैं ना, हम भी तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई आवर्स बर्न कर रहे हैं, अपनी जीपीयूज बर्न कर रहे हैं, तो हमारा पैसा लग रहा है। और वो पाकिस्तान में एक नॉर्मल ट्रेंड है कि पेमेंट डिले हो जाना बुरा नहीं समझा जाता, तो वो हमारी पेमेंट कोई 3 महीने तो मसला ही नहीं है। अच्छा वो फिर एक हम सर्विस देके समझ रहे हैं हमने अर्न कर लिए पैसे, लेकिन अर्न करके आप यूज नहीं कर सकते तो पैसे आपने नहीं अर्न किए। ये हमें बड़े रोने धोने के बाद और इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद समझ में आया है कि पैसा वही होता है जो हाथ में होता है। तो फिर वो जब वो इनवॉइस को भी 60 डेज का टाइम होता है, मगर वो इनवॉइस के अलावा भी जो है हमें पता है कि कल्चर है कि 2-3-4 महीने की तो खैर है, कोई अमेरिका चला गया वो आके साइन करेगा, कोई बिजी हो गया था, सो दैट इज अ कल्चर, ठीक है। और मैं बहुत इंकरेज करूंगी, और ये मेरा अपने आप से वादा है कि जिस दिन मैं उस पोजीशन पे होंगी आई बी रिस्पेक्टफुल एंड पंक्चुअल इन पेमेंट्स, क्योंकि ये पूरा ट्रिपल कर देता है एक छोटे से स्टार्टअप को, वेयर मनी रियली मैटर्स एंड टाइमलीनेस रियली मैटर्स। इतनी तकलीफ काटने के बाद, यानी हमने इतनी ज्यादा सर्विस दे के जब पैसे नहीं आ रहे, फिर हम लोग ग्रांट्स के पास गए, और ग्रांट्स के वो जो एक एक फॉर्म फिल करना था वो शुरू किया, और उसके बाद हमने अपनी फिर दोबारा सीकिंग फंडिंग। So you have to really test the waters. Sometimes your service is such कि वो revenue ही आप sustain कर लेगा, मगर if I speak even on behalf of the people who are my potential clients, कि आजकल वाकई में महंगाई ऐसी है, पेट्रोल की प्राइस काबू नहीं आ रही, डॉलर की प्राइस काबू नहीं आ रही, और पूरी दुनिया में जो एक सैलरी कट हो रहे हैं, तो वाकई में शायद पे करना हर एक के लिए मुश्किल है। नाउ देयर इज नो रूल कि आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, या देयर इज नो रूल कि आपने फंडिंग की तरफ जाना है या नहीं। सिर्फ ये याद रखिएगा कि डोंट कॉम्प्रोमाइज। कभी कभी मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज इफ यू थिंक दैट व्हाट यू डूइंग इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर स्टार्टअप। सिक्योर योर स्टार्टअप, प्रिजर्व योर स्टार्टअप, तो ये बहुत जरूरी है। एक और चीज बहुत दिमाग में रखिएगा कि see when you're dealing with money, these things you're not in black and white. Engineering and tech के लोगों को बहुत मजा आता है ब्लैक और व्हाइट में रहने का, स्टार्टअप्स में आप ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रह सकते। तो आप अगर आपको कोई फंडिंग दे रहे हैं तो आपको ये भी चेक करना है कि व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी। कल को ये ना हो कि नैब के दफ्तर में वाले आके आपका जो स्टार्टअप बंद कर दें कि इट इज बीइंग रन बाय सम money whose source is questionable. So you have to be very careful, and this is where network helps. If you're in a good network and your mentors are genuine, then they'll not let you make these mistakes. So quick money, no matter how desperate you are, it's your startup, आपकी दिन रात की मेहनत है। Quick money में jump करना, इससे पहले verify कर लें कि what is the whole deal. And इससे आगे finance specialist होना चाहिए on the side as a consultant before you put your signature on anything. So yeah. Sure, that's very nice. बिल्कुल। अच्छा, आप
पार्टिसिपेंट से मैं बोलूँगा कि कोई आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है I think anyone can open mic and either comment or share their बिल्कुल, experience or ask बिल्कुल। question. एजाज साहब, आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, तो अगर आपकी कोई क्यूरी है इस हवाले से बिल्कुल श्योर। जैसा आप म्यूट पे हैं। ओके मैम, काफी अच्छा लेक्चर दिया आपने, काफी इंफॉर्मेटिव एंड काफी जो है वो इस हवाले से। अभी तो पॉइंट्स क्लियर हैं। अभी मैं अपने स्टार्टअप में इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू हूँ, तो अभी मैं तो अपनी प्रपोजल बना रहा हूँ एंड मार्केट सर्वे एंड सजेशंस को है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओके है। तो आगे देखते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा इस हवाले से। बिल्कुल, यू नो वन थिंग जो मैं चाह भी रही थी कि इस एस्पेक्ट को जरूर डिस्कस करूं, एंड दैट एस्पेक्ट इज कि you have to stay connected and we have to be there for each other because इस जर्नी में it gets very lonely. जब आपका कोई मसला है तो there is no boss to go to, या होता ना कि यार बॉस ही बुरा है, बॉस हम खुद ही बॉस है और खुद ही बने हैं बॉस। तो अब हमें ये जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने। फील फ्री टू रीच and if I can help then I'll be very happy to help. थैंक यू। अगर नहीं है जी कोई सवाल तो हम इधर रोक भी सकते हैं। बिल्कुल श्योर। मैं सिर्फ चाहता कि हमारे जो स्टार्टअप बैठे हुए थे, अगर उनको कोई क्यूरी है, एहसन को, अली अहमद को, तो वो शेयर करें। अदरवाइज बिल्कुल इसको रिकॉर्डिंग चाहे तो आप बंद करो। चलो, मेरे ख्याल में फला कोई क्वेश्चन नहीं है इन लोगों का। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, टाइम निकाला। बल्कि मैं आपको फिजिकल सेशन की दावत दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो चाह रहे हैं आपको हैदराबाद में देखना। तो मैं इंशाल्लाह इसको भी प्लान आउट करते हैं। आप किसी वक्त टाइम निकालें तो हैदराबाद जरूर चक्कर लगाइए, ठीक है? बिल्कुल, मैं ट्यूसडे थर्सडे मेरी टीचिंग कमिटमेंट है आईबीए में, और उसके अलावा आई लुक फॉरवर्ड टू, मैंने इतना जबरदस्त एनआईसी का देखा है, एनआईसीएच का, एंड आई नो हु इज रनिंग इट, सो आई रियली वांट टू विजिट एंड बी देयर। और इंशाल्लाह अगर हम उधर जाएंगे तो हम लोग फिर कोई वर्कशॉप कर लेंगे एक स्किल बेस्ड, ताकि वो कोई फायदा हो मेरी विजिट का भी। एहसन, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। चलें, चलें जी, थैंक यू टेक वेरी केयर मच। ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड रिमेंबर वन थिंग कि इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी, ठीक है, घबराना नहीं है। अल्लाह हाफिज़। चलो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you everyone.